Chapter number 2: The Stone Age and Earliest Societies. Historians believe that human beings first appeared on Earth about 1.5 million years ago. The development of human beings on this Earth is a very interesting process. Earliest humans were food gatherers, hunters, and nomadics, always in search of food and shelter. They traveled from one place to another, hunted animals, and gathered fruits, roots, seeds, and nuts. When there was shortage of animals or plants in one area, they moved to another area in search of food. A group generally consisted of a few men and women and children who stayed together with the elders. They considered it safer to move in groups rather than wander about all alone. Early humans led a primitive life. They remained without clothes during summers, but in the winter season they wore animal skins, leaves, and the barks of trees to keep themselves safe from severe cold. They used to spend their nights on trees or in rock shelters and caves that protected them from wild animals when asleep. अब बोला जाता है कि ह्यूमंस का अपीयरेंस कब 1.5 मिलियन ईयर्स अगो का माना जाता है। पहले के ह्यूमंस फूड गैदरर्स थे, हंटर्स थे, नोमैड की तरह रहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे और हमेशा शेल्टर और फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। वो हंट करते थे एनिमल्स को और गैदर करते थे फ्रूट, रूट्स, सीड्स एंड नट्स को, और वो स्टोर कर जहाँ अगर शॉर्टेज हो जाती थी एनिमल की और प्लांट की एक जगह पे, तो वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। वो गर्मियों के दिनों में बिना कपड़ों के रहते थे और सर्दियों में वो स्किन पहनते थे एनिमल का, बार्क ऑफ ट्री पहनते थे, लीव्स पहनते थे। और एल्डर्स और चिल्ड्रन और वुमेन्स के साथ सब साथ एक साथ मूव कर किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। How do we know about these people? We come to know a lot about the earliest human beings from their evidences in the form of stone tools and weapons. During the prehistoric period, human beings defended themselves against all types of wild animals using stones by attaching them to handle of bones or wood and by making weapons in the form of spears or arrows. They also hunted animals with these weapons. The stone helped early humans in different ways. For example, the stones were used to hunt animals. They were used to remove the skin of animals, cut meat and bones. Stones were also used to cut trees and clear forests. Wonderful to know. Hominids. According to scientists, hominids were not human beings, but they were similar to human beings. Most of the scientists think that human beings developed or evolved from them. इसमें बता रहा है कि हम लोग को इनके बारे में कैसे पता चलता है, तो इनके स्टोन टूल्स और वेपन्स के थ्रू इन लोग के बारे में पता चलता है। प्री हिस्ट्री में ह्यूमन लोग कैसे अपने आप को डिफेंड करते थे, कैसे अपने लिए फूड इकट्ठा करते थे या कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, वो सब उस सब के बारे में इनके टूल्स और वेपन्स के द्वारा पता चलता था। और बोन्स ये टूल्स बोन्स हैंडल के बने रहते थे या तो वुडन हैंडल्स के बने रहते थे। स्पेयर्स थे, एरोज थे जो यूज़ करते थे ये लोग हंट करने के लिए। तो ये हंट करने के साथ साथ एनिमल को हंट करने के साथ साथ स्किन रिमूव करने के, एनिमल का स्किन रिमूव करने के लिए, इसका मीट कट करने के लिए, बोन्स निकालने के लिए यूज़ करते थे। यहाँ तक कि ये लोग इन टूल्स से ट्रीज को कट करते थे और फॉरेस्ट को क्लियर करते थे। होमिनिड एक तरह का प्रजाति है जो माना जाता है कि ह्यूमन की तरह है, पर ह्यूमन नहीं था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हम लोग का
हम लोग इन्हीं के द्वारा आए हैं। इन्हीं से हमारी उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा मानी गई है। The Stone Age. The main object used by early humans was stone. They depended on stones for their survival. That is why this period is called Stone Age. On the basis of development of different stone tools, anthropologists have divided the Stone Age into different stages. Stone Age is classified into 3 sub-periods on the basis of the type and quality of stone tools used by early humans. Number 1. Paleolithic Age or Old Stone Age. Number 2. Mesolithic Age or Middle Stone Age. Number 3. Neolithic Age or New Stone Age. ये स्टोन एज इसलिए कहा गया है क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें स्टोन्स पे ही डिपेंडेंट थे। ह्यूमन जो थे वो सारे स्टोन से ही सारे काम किया करते थे, इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन एज को डिफरेंट भागों में बांटा गया है। मेन 3 भाग हैं: पैलेलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। The Paleolithic Age. It is considered that evolution of mankind started in this period. It roughly began around 50,000 BC and ended around 10,000 BC. This period is further subdivided into 3 phases on the basis of changes in climate and stone tools used. The division is as follows. Number 1. Lower Paleolithic Age or Early Old Stone Age. Number 2. Middle Paleolithic Age or Middle Old Stone Age. Number 3. Upper Paleolithic Age or Upper Old Stone Age. Lower Paleolithic Age. This age is considered as the formative age. During this age, many parts of the earth were covered heavily with ice, and the climate was extremely cold. Geologists define this cold period as Ice Age or Pleistocene period. The most common tool of this age was the hand axe, which was mainly used for chopping trees and hunting animals. Therefore, these tools are also known as choppers. In India, these tools were mainly found in Punjab and on the banks of river Narmada in Madhya Pradesh. पैलेलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज, अपर पैलेलिथिक एज। लोअर पैलेलिथिक एज में उस समय क्या था, पूरा अर्थ आइस से ढका हुआ था, क्लाइमेट बहुत कोल्ड थी। जियोलॉजिस्ट इसको कोल्ड पीरियड कहते हैं या आइस एज कहते हैं। और उस समय जो वेपन्स यूज़ करते थे वो हैंड एक्सेस थी। वो हैंड एक्सेस चॉपिंग ट्री करने के लिए, एनिमल को मारने के लिए काम आता था, इसलिए इसको चॉपर भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर पंजाब में ये टूल्स मिले हैं और रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश के किनारे मिले हैं। Middle Paleolithic Age. The main tools of this period were the different types of borers and scrapers made of stone. These tools have been found from different places in India that include the banks of river Narmada in Madhya Pradesh and the Son Valley in Punjab. Upper Paleolithic Age. Upper Paleolithic Age is the final phase of the Ice Age. This age ends just as the onset of agriculture. During this age, the climate changed dramatically. From cold, it became warm. The tools used by humans during this age were blades and burins. Wonderful to know. Paleo means old, Meso means middle, and Neo means new. Lithic comes from the Greek word lithos, meaning stone.
पाए जाते हैं। ये टूल्स नर्मदा रिवर के किनारे मध्य प्रदेश में सोन वैली पंजाब में पाए जाते हैं। अब अपर पैलेओलिथिक एज, ये एज आइस एज का एंड होता है। अब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होती है वो वार्म होने लगती है, एग्रीकल्चर का शुरुआत हो जाता है और क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो जाती है। लोगों को ठंड से वो अब गर्म होने लगते हैं, क्लाइमेट गर्म होने लगती है, जिससे ह्यूमन को ब्लेड्स और रील्स जैसे वेपन्स यूज करने में आते हैं। Discovery of fire. During this period, early humans learned to light fire. It was one of the greatest discoveries made by early humans. Early humans knew about fires. They saw natural fires, such as forest fires, but they did not know how to light a fire on their own. How did humans learn to light a fire? Perhaps two stones were rubbed together, producing sparks, and the sparks fell on some dry leaves lying nearby. Or perhaps lightning struck a tree and it went up in flames. Early humans soon discovered that they could use fire to keep themselves warm in cold and to scare away wild animals. They discovered that the flesh of animals tasted better when heated on fire and learned cooking. पहले के लोग फायर के बारे में नहीं जानते थे। वो लोग फॉरेस्ट फायर को देखा, लेकिन फिर भी फायर बनाना नहीं जानते थे। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि उन लोगों ने दो स्टोन्स को रगड़ा, जो स्टोन को रगड़ने से जो फायर निकला उससे फायर निकला, तो वो उससे उजाला हुआ। उनको पता चला कि ये लाइट देने के काम आ सकता है, स्केयर करने के लिए काम आ सकता है। बाद में कुछ दिनों बाद एक दिन फ्लैश गिर गया, तो वो फ्लैश जब उसमें से निकाल के खाया तो उनको पता चला कि ये फ्लैश भी अगर कुक हो जाता है फायर में तो वो टेस्ट करता है अच्छा। The Mesolithic Age. The Mesolithic Age started around 10,000 BC and ended around 8,000 BC. The climate changed and became dry and warm. Humans of this age developed small, sharp, pointed stone tools called microliths. The Neolithic Age. This period lasted from about 8,000 BC till about 4,000 BC. The tools of this new stone age were more advanced than earlier age tools, much sharper than the tools of Mesolithic period. They sparkled due to polishing technique used over them. Tools of this period were axes, sickles, spears, and arrowheads. Mesolithic Age 10,000 BC से 8,000 BC के बीच में माना जाता है। इस समय क्लाइमेट चेंज हो गया था, कोल्ड से वार्म और ड्राई हो गया था, और इस समय जो इस एज में जो ह्यूमन डेवलपमेंट थे, टूल्स बनाते थे, वो स्मॉल थे, शार्प थे, पॉइंटेड थे और यूज़ करते थे। न्यूलिथिक एज को 8,000 BC से 4,000 BC माना जाता है। इस एज में उससे अच्छे और भी डेवलप टूल्स बनाए गए और ये उससे भी ज़्यादा स्पार्कल और पॉलिश टेक्निक से बने हुए थे। ये टूल्स एक्सेस, सिकल, स्पेयर, एरोहेड इस तरह के थे। Wonderful to know. Microliths are found in many parts of India, like Chota Nagpur in Jharkhand, and also on the banks of the river Ganga between Ghazipur and Varanasi in Uttar Pradesh. Making of stone tools. Tools belonging to 3 Stone Age periods were found at many places. Stone was easily available at that time. Therefore, most of the tools were made of stone. Early tools were
they discovered flint, a type of stone, and used it for making tools and weapons. Flint has special qualities. It can chip easily and can be molded into different shapes. Small and big stones were used to make tools and weapons. Axe head, hammers, and choppers were made from big stones. The axe head was tied to a stick, which made it more efficient tool. Knives and scrapers were made from small pieces of stones. Arrows and spears made from smaller stones were used to hunt animals. Techniques of tool. अब क्या था, स्टोन्स को कैसे बनाते थे ये लोग। स्टोन्स को स्टोन से एक दूसरे पे चोट दे के मार के बनाया करते थे। बाद में उन्होंने फ्लिंट से एक टेक्निक डिज़ाइन की जो एक तरह का स्टोन था जो वेपन बनाने के काम आता था। बाद में उन्होंने स्मॉल बिग स्टोन से बहुत सारे टूल्स बनाए, एक्स हेड, हैमर, चॉपर, इस तरह के बिग स्टोन्स से टूल्स बनाए और ट्राई किया कि वो स्टिक से बन के बहुत एफिशिएंट वर्क करे। नाइफ्स बनाए, स्पेयर बनाया स्मॉल पीस ऑफ स्टोन से, एरो और स्पेयर बनाया स्मॉल स्टोन से एनिमल को हंट करने के लिए। Of tool making, the stone tools were produced by two distinct techniques: stone on stone. In this method, one hand of the tool maker firmly held the stone or core from which the tool was to be made. With the other hand, another stone was used as a hammer. This hammer stone was used to strike off flakes from the core stone till the required shape and size were obtained. Pressure flaking. In this method, the core stone was placed on a firm ground or surface. The hammer stone was placed on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. Uses of stone. The stone tools were used to dig the ground, hunt animals and skin them, cut trees, scrape the barks of trees, chop meat, fruits and wood, and to stitch animal skins for making clothes. इसमें बता रहा है कि टेक्निक्स ऑफ टूल्स मेकिंग, टूल्स किस तरह बनाते थे। एक स्टोन एंड स्टोन से, एक स्टोन को नीचे रख के दूसरे स्टोन से उसको हैमर की तरह यूज़ करके चोट दे के बनाया जाता था। दूसरा प्रेशर फ्लैकिंग। इस मेथड में कोर स्टोन को प्लेस कर दिया जाता है एक फर्म ग्राउंड या सरफेस पर, उसके बाद हैमर स्टोन से उसको धीरे धीरे मार के बनाया जाता था। ये इस तरह से दो टेक्निक्स यूज़ करते थे वो टूल्स बनाने के लिए। यूज़ ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स का क्या यूज़ करते थे वो लोग, और ग्राउंड को डिग करने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, हंट करने के लिए, स्किन निकालने के लिए, ट्री कट करने के लिए, स्पेयर बनाने के लिए, बार ट्री का निकालने के लिए, चॉप मीट करने के लिए, फ्रूट्स को तोड़ने के लिए, वुडन लकड़ी वुड को काटने के लिए, और एनिमल की स्किन को निकालने के लिए, क्लोथ बनाने के लिए, उससे क्लोथ बनाने के लिए यूज़ करते थे। Rock paintings. Early humans lived in caves and they decorated them with paintings on the walls. These drawings were of running wild horses, bisons, bears, stags, and herds of other animals. Some of these are found in Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. Red, green, white, and ochre colors are used in the paintings. These paintings also show men hunting either in groups or alone, riding, women grinding and preparing food and dancing, etc. अब इसमें इन लोगों ने रॉक पेंटिंग भी की। रॉक पेंटिंग करके अपने केव्स को डेकोरेट करते थे ये लोग। ये रनिंग वाइल्ड हॉर्स,
डियर, स्टाइल, हर्ट्स ऑफ अदर एनिमल्स के झुंड को बनाया करते थे। ये सब चीज़ हम लोग को कहाँ की गुफाओं में देखने के लिए मिल सकता है? मध्य प्रदेश की गुफाओं में और उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। ये कौन से कलर यूज़ करते थे? रेड कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर यूज़ किया करते थे। ये इस पेंटिंग में ज़्यादातर मैन हंटिंग को शो किया गया है, राइडिंग को शो किया, वुमेन ग्राइंडिंग को शो किया गया है। Environmental changes. As discussed earlier, the climate of the world changed around 12,000 years ago. It became warm from cold. Due to this change, grasslands developed. This development increased the number of animals that survived on grass. Hunters of these animals also followed them. They learned about their breeding seasons and for food habits. Slowly, people started thinking about rearing these animals themselves. During this time, several grain-bearing grasses including rice, barley, and wheat grew naturally in different parts of the subcontinent. Early humans collected these grains and used them as food. They learned their cycle, when they ripened, and where they grew. This month, अब इन्वायरमेंट चेंज होने लगा, धीरे धीरे वो वार्म होने लगा, कोल्ड से वार्म होने लगा, ग्रासलैंड डेवलप हो गया। तो ग्रासलैंड डेवलप हुआ तो ग्रास खाने वाले एनिमल्स भी डेवलप होने लगे, ज़्यादा होने लगे। तो उन लोग ये देख के उनकी ब्रीडिंग सीजन और उनके फूड हैबिट्स के बारे में पता चला। लोग सोचने लगे कि इसको एनिमल को रेयर करना चाहिए। फिर उन लोगों ने फार्मिंग भी एक तरह से स्टार्ट कर दी। उन्होंने राइस, बार्ली भी नेचुरली ग्रो हुआ सब कॉन्टिनेंट पे देखा, तो उससे उन्होंने ग्रेन कैसे डेवलप होता है ये उनको जानने के लिए मिला। और उनकी ड्रिपिंग और उनकी ग्रो साइकिल पता चली, और इस तरह से उन्होंने प्लांट ग्रो करना भी सीख लिया। this might have been the beginning of growing plants by humans. Case study. Hunski and Bajpar Valley in the Deccan have several stone age sites. Most of them are early Paleolithic sites. A large number of finished and unfinished tools have been found here. This shows that early humans lived here for a very long time, and the sites were probably habitation as well as factory sites. Most tools were made from limestone, which was locally available. अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी हम लोग को ये पता चलता है कि लोग कि अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में फ्रांस में भी रॉक पेंटिंग वगैरह पाई गई है। बहुत सारे आयरन ओर्स और चारकोल से बनाए हुए पेंटिंग पाए गए हैं। एनिमल्स की रेनडियर्स की ये सब की पेंटिंग पाई जा रही है। इस तरह हम यहाँ पे आज सेकेंड चैप्टर एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस चैप्टर। थैंक यू।